Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Today's discussion is entitled Gaura leads us to the top. आज की जो चर्चा है उसका शीर्षक है गौर हमें कैसे उत्तम अवस्था तक लेकर जाते हैं. I assume that all of you are aware that there will be a great festival coming up within a few days only. मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि कुछ ही दिनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव आने वाला है. Shri Gaura Purnima Maha Mahotsava. श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव. Very important festival. बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव. So as it will be on Tuesday, only a few days from here, it's good that we already start tuning in to the mood of Gaura. जैसे ये मंगलवार को ये है तो इससे अच्छा है कि हम पहले से इसके बारे में चर्चा करने लगे. Today we shall not discuss only Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, but a little bit of his associates also.
तो आज हम केवल चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं, उनके संगियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, particularly one associate of his. खास करके एक उनके संगी के बारे में. Do you happen to know what is the day today? What is special about today? क्या आपको पता है कि आज के दिन कोई विशेष चीज क्या है? कोई It's a Tirobhava Tithi, a disappearance day of one great Vaishnava Acharya. एक तिरुभाव है, एक महान उत्तम वैष्णव आचार्य जी का. So we shall be discussing a little bit this personality, Srila Madhavendra Puri. तो हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, श्री माधवेंद्र पुरी के बारे में. It's usually a nice practice to approach the Lord through his devotees. ये आमतौर पे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि हम भगवान को उनके भक्तों के द्वारा पहुंचे. That's why when we come to the temple, first we offer obeisances and glorification to the devotees. इसलिए जब हम मंदिर आते हैं तो सबसे पहले हम भक्तों को गुणगान करते हैं. Then to the gurus. फिर उसके बाद हम गुरु का गुणगान करते हैं. And then finally to the Lord himself. और फिर अंततः भगवान का गुणगान करते हैं. Same thing while chanting Hare Krishna. वैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र में भी करते हैं. So first there's Radha's name and then Krishna's name. पहले राधा रानी का नाम है, फिर भगवान कृष्ण का नाम है. But that was about today's topic, Gaura leading us to the top. We can ask a question, what is success in life? तो आज का जो शीर्षक है उसमें हम पूछ सकते हैं कि जीवन में सफलता क्या है? Who do we usually think of as a successful person? हम किसको एक सफल इंसान जानते हैं? What do you say? Who is successful? Can you name some successful person? कोई सक्सेसफुल, कोई सफल व्यक्ति का नाम बताएंगे? आपको क्या लगता है? कौन सफल? बताइए कोई भी सफल. I don't know so many Indian celebrities, but I'm sure you know Mr. Elon Musk. मैं बहुत सारे भारतीय सेलिब्रिटीज को नहीं जानता, मगर आप मुझे पक्का पता हो आप इलॉन मस्क को जरूर जानते होंगे. I believe many would say that he is a very successful person. मुझे लगता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो एक सफल आदमी है. But devotees most likely would disagree. जो भक्त हैं ज़्यादातर वो इस पे एग्री नहीं करेंगे. Often people think that one who has money and is known all over this little planet, that is a successful person. तो आमतौर पे लोग सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है और वो इस लोक में जाना जाता है वो थोड़ा सफल है. But God's view is quite different from that. मगर भगवान का जो परिप्रेक्ष्य है वो इससे बिल्कुल भिन्न है. Or actually, it's entirely different. और ये एक्चुअली ये तो बहुत ज़्यादा ही भिन्न है पूरी तरह. And the devotees of God naturally share the same views. और जो भगवान के भक्त हैं वो भी स्वाभाविक रूप से यही परिप्रेक्ष्य अपने में देखते हैं. Here's one famous shloka from Srimad Bhagavad Gita. तो एक बहुत ही विख्यात श्लोक है भगवत गीता से. Ya nisha sarva bhutanam tasyam jagrati samyami. Yasyam jagrati bhutani sanisha pashyata munehe. What is night for all beings जो रात है बहुत जीवों के लिए is the time of awakening for the self-controlled. वो संयमी के लिए उठने का समय है. Self-controlled meaning the devotees. आत्मसंयमी मतलब जो भक्त हैं. And the time of awakening for all beings और जो समय है जहाँ पर सभी जीव उठते हैं is night for the introspective sage. वो उस मुनि के लिए रात्रि है. So it is literally like day and night. पूरी तरह जैसे दिन और रात. This is one of the reasons why this material world is said to be upside down. ये एक कारण है क्योंकि ये भौतिक जगत को बोला जाता है कि ये परछाई है. People in general are after sources of misery. लोग आमतौर पर दुख के स्तोत्रों को ढूंढ रहे हैं. But why misery? मगर दुख क्यों? Why would we say that money or fame is miserable? हम ऐसा क्यों कहें कि पैसा और यश जो है वो दुखदाई है? What do you think? What could be? Is there any reason why one would say money is miserable? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कोई कारण है कि हम सोचें कि
पैसा जो है वो दुखदाई है। It is mostly about instant pleasures. After a while, we get bored of it. Yeah, that's one good reason. And how Krishna says that these things, they have a beginning and an end. और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसी चीजों का एक शुरुआत भी है और एक अंत भी है। If we think a lot about money, that does not do us very good. अगर हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो उससे हमारा कोई भला नहीं होता। We become more and more selfish, हम और भी ज्यादा स्वार्थी होते जाते हैं। thinking about ourselves only. अपने मोबाइल के बारे में सोचते हैं। And then when we are thinking about ourselves only, then we are miserable. तो जब हम अपने ही बारे में सोचते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। Because then we will see so many problems. Oh, this problem, that is that problem. Oh, something wrong with the body, something wrong with the mind. It's endless. हम देखेंगे ये समस्या, वो समस्या, शरीर की समस्या, मन की समस्या, ये तो अंत ही नहीं है। So Krishna consciousness means that we stop thinking about ourselves so much. कृष्ण भावना में मतलब हम अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचते। Because there is no happiness in thinking about our own self. क्योंकि अपने बारे में सोचने में तो कोई खुशी है ही नहीं। But there is unlimited happiness in Krishna's pastimes. मगर भगवान की लीलाओं में अनंत खुशी है। These temporary things, they are always miserable. जो क्षणिक चीजें हैं वो हमेशा दुखदाई होंगी। Krishna says, well, because they have a beginning and an end. कृष्ण कहते हैं क्योंकि उनकी शुरुआत है और उनका अंत है। Yahi samsparshaja bhoga dukkhayona evate aryantavanta kaunteya nateshu ramatesu buddha. That those who are wise, that they don't try to enjoy such things. जो बुद्धिमान लोग हैं वो इन चीजों में रमनते नहीं हैं। Understanding that the sweeter it was in the beginning, the more bitter it will be in the end. जितना मीठा वो शुरुआत में है, उतना कड़वा वो अंत में होगा। So one who gets a lot of money by some good fortune, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए अच्छे दैव से, and then when he loses the money, he will be more unhappy than one who never even had the money. और जब वो पैसा उससे छीन लिया जाएगा तो वो उससे उतना और दुखी होगा उस बजाय उसके जिसके पास पैसा था ही नहीं। And moreover, people are seeking happiness here in this world without asking from those who have experience. और लोग इस संसार में खुशी ढूंढ रहे हैं बिना उनसे पूछे जिनके पास खुशी है कि नहीं। So those who have experience of possessing lots of money, no one becomes peaceful or happy by that. जिनके पास अनुभव है बहुत सारे पैसे का, वो कभी खुश नहीं होते। But everyone is thinking that I will still be happy when I get that. मगर हर व्यक्ति सोचता है कि मैं खुश हो जाऊंगा अगर मुझे मिल जाएगा। It is a misunderstanding, an illusion. ये एक गलत धारणा है, एक माया है। Sometimes even when there is experience, still these experienced people try to force others on the path that they have been. कभी-कभी लोगों को अनुभव भी हो जाता है, फिर भी ये अनुभवी लोग दूसरों को जबरदस्ती इस मार्ग पर धकेलते हैं। Some businessman can see that his life is full of anxiety, but still he wants his son to continue doing कोई that. व्यापारी देखता है कि उसका जीवन हमेशा दुखदाई है, फिर भी वो अपने पुत्र से चाहता है कि वो उसी जीवन में व्यस्त हो। Or so many have experienced that married life is full of all kinds of hardship. और बहुत सारे लोगों को अनुभव होता है कि जो शादी का जीवन है बहुत ज़्यादा कठिन है। But still, such parents might become disturbed when they hear that their son wants to become a brahmachari. और फिर ऐसे जो माता-पिता हैं वो विचलित हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनका पुत्र ब्रह्मचारी बनना चाहता है। Saying that, no, this is not right, you have to marry. नहीं, ऐसा नहीं, सही नहीं है, तुम्हें शादी करना चाहिए। And then the son might ask, well, did you become happy by marrying? और पुत्र पूछ सकता है क्या आप खुश हैं शादी करके? And then the father might say, well, not really, but still you should do that. तो पिताजी कहेंगे कि नहीं, मैं तो नहीं था, मगर फिर भी तुम आओ, शादी करो। It is crazy. ये पागलपन है। And if we see that the whole world is crazy, why would we like to follow that? और जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया ही पागल है, उसको हम क्यों उसका अनुसरण करें? So there is no advantage in being normal in that sense. कोई लाभ नहीं है नॉर्मल होने में। Well, Krishna's path and his method is the best. कृष्ण का जो रास्ता है और उनकी जो विधि है वो सर्वोच्च है। Because his knowledge is the best. क्योंकि उनका ज्ञान
सर्वोच्च है, naturally, because he knows everything. क्योंकि उनको सब कुछ पता है, Nothing is hidden from him. भगवान से कुछ छुपा नहीं। But even better than Krishna's path is the path of Gaura. मगर भगवान कृष्ण के रास्ते से भी और बेहतरीन रास्ता है जो है गौरंग महाप्रभु का रास्ता। Why is it so? Why is Mahaprabhu's path so nice? क्यों महाप्रभु का रास्ता इतना अच्छा क्यों है? It is said, Namo Mahavarannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishya Namaha. He is the Mahavarannaya, the most magnanimous. तो गौरंग महाप्रभु महावदनीय है, सबसे ज्यादा उदार ही। He's given the best of things, Krishna Prema. उन्होंने सबसे अच्छी चीज हमें दी है, कृष्ण प्रेम। And to whom he is giving that? और किनको वो दे रहे हैं? To the worst of the people. सबसे नीच लोगों को वो दे रहे हैं। Us who have appeared now in this age of Kali. हम लोग जो अभी इस कलयुग में आए हैं, So he's giving that free of charge, तो वो मुफ्त में हमें ये दे रहे हैं, without any conditions. बिना किसी कंडीशंस के। Krishna says in the Gita that first you surrender and then I will take care of you. कृष्ण कहते हैं कि पहले तुम मेरी शरणागति लो, तब मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा। But Sriman Mahaprabhu, he does not even demand that. He just says, take it, take it. मगर चैतन्य महाप्रभु ये वो भी शर्त नहीं रखते, ये कहते हैं ले लो ले लो। That, if anything, that is amazing. तो ये बहुत ही अच्छा है। Before the Lord appears himself, he always sends some of his devotees. भगवान के आने से पहले वह अपने भक्त भेजते हैं। So these devotees appear before the Lord himself appears. तो ये भक्त पहले आते हैं जब भगवान के आने से पहले। Of course, there has to be the Lord's parents in his Leela. तो निश्चय रूप से भगवान के माता पिता भी होने चाहिए लीला में। Also, in Mahaprabhu's Leela, there were Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, who appeared before him. तो महाप्रभु की लीला में अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु उनसे पहले आए थे। And his parents, of course. और उनके माता पिता निश्चय रूप से। And Srila Madhavendra Puri. और श्रीला माधवेंद्र पुरी। Srila Madhavendra Puri, he was the spiritual master, Guru Maharaj of both Nityananda Prabhu and Advaita Acharya. तो माधवेंद्र पुरी नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के गुरु थे। And he was also the guru of Ishvara Puri Maharaj, who was Krishna Chaitanya Mahaprabhu's guru. और वो ईश्वर पुरी जी के भी गुरु थे जो कि महाप्रभु के गुरु हैं। So if he was the guru of such personalities, the guru of Krishna Chaitanya Mahaprabhu himself, so what kind of a personality he must be? तो अगर वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार के व्यक्ति वो होंगे। Very, very elevated personality. बहुत ज़्यादा उत्तम स्तर के व्यक्ति। Krishna Chaitanya Mahaprabhu himself was saying repeatedly that there is no such person ever existing as Srila Madhavendra Puri Maharaj. चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला कि ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं था माधवेंद्र पुरी जैसा। He, in this Gaudiya Vaishnava Parampara, he introduced this Madhurya Ras. माधवेंद्र पुरी जी ने इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में माधुर्य रस को स्थापित किया। And also established this mood of vipralamba, the mood of separation. और विप्रलंबा भाव की भी स्थापना की। So he was personally experiencing the mood and feelings of Srimati Radharani. तो वो स्वयं अनुभव कर रहे थे राधा रानी के भाव को। Those same feelings that Sriman Mahaprabhu came to taste himself. वही सेम भाव जो महाप्रभु खुद अनुभव करना चाहते थे। While Madhavendra Puri, he was a sannyasi, of course, and he was going here and there. तो माधवेंद्र पुरी एक सन्यासी थे, वो इधर से उधर विचरण करते थे। While he was staying at Govardhan, once in a dream, Gopal Diti appeared to him. तो जब वो गोवर्धन पे एक बार रह रहे थे, तो उनके स्वप्न में गोपाल जी के एक विग्रह है। So Gopalji told him that you have to come into the jungle and I'm hidden there. Please come and find me. तो गोपाल जी ने उन्हें कहा कि मैं जंगल में, मैं वन में हूँ अभी, प्लीज कृपया मुझे आकर मुझे ढूंढिए। So then they arranged a group of people and went into the jungle. तो उन्होंने फिर एक समूह इकट्ठा किया और जंगल और वन में गए। And excavated this Gopal Diti there. और फिर गोपाल जी की जो विग्रह था उन्हें लेके स्थापित किया। And after that, Gopalji was
installed there on top of the Govardhan hill. उसके बाद गोपाल जी का जो विग्रह था वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित किया गया It was a big festival what they arranged और एक बहुत बड़ा महोत्सव था जो उन्होंने अरेंज किया with literally tons of bhoga they were bringing from all the villages nearby and gathering it there to offer the Lord. और बहुत सारा भोग जो था वो उन्होंने इकट्ठा किया और भगवान को अर्पित किया Later on, Madhavendra Puri, he had to travel to Jagannath Puri. बाद में माधवेंद्र पुरी को जगन्नाथ पुरी जाना पड़ा This was because he was requested by Gopalaji that he should bring some chandan and camphor. क्योंकि उनको गोपाल जी के द्वारा अनुमोदित किया गया था कि उनको कुछ चंदन लाना है और लेकर आना है So just see the effort. He could have had the sandalwood somewhere close by, but he had to go there to the other side of the country. वो पास से भी चंदन ले सकते थे मगर वो बहुत दूर उनको जाना पड़ा चंदन लेने के लिए Just to fulfill the Lord's desire. केवल भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए So during these travels, there was one very famous incident, which was also told by Krishna Chaitanya Mahaprabhu to his associates later तो on. जब वो जा रहे थे तो उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा एक बहुत ही लीला आती है जो हम डिस्कस करेंगे Have you heard of this Kira Chora Gopinath? क्या आपने सुना है खीर चोर गोपीनाथ के बारे में It is the story is explained there in Sri Chaitanya Charitamrita. ये कथा जो है वो चैतन्य चरितामृत में विवरण है इसका So while traveling on his journey to get this chandan, Madhavendra Puri, he went through Bengal. तो माधवेंद्र पुरी जब वो जा रहे थे तो बंगाल से भी होते हुए वो जाना पड़ा उन्हें And there was a famous Gopinatha temple. तो एक बहुत ही विख्यात गोपीनाथ भगवान का मंदिर था And they had a very special type of kheer what they were preparing there. और उनके पास बहुत अच्छी एक विशेष प्रकार की खीर थी जो वो प्रिपेयर करते थे The temple was well known especially for that kheer, और a जो special मंदिर- recipe. और जो मंदिर था वो विख्यात था इस खास प्रकार की खीर बनने के लिए And then a desire arose within the heart of Srila Madhavendra Puri. तो एक इच्छा आई माधवेंद्र पुरी जी के हृदय में He was thinking that, oh, if only I could have little of that and taste, and maybe I could somehow make similar preparation to bring to my Gopalaji. तो अगर किसी तरह मैं उस खीर को चख लूं थोड़ा तो मैं वही प्रकार का जो स्वाद है अपनी खीर में डालूंगा जो मैं गोपाल जी को दूंगा But then immediately he felt ashamed, मगर एकदम से फिर उनको थोड़ा शर्म महसूस हुआ thinking that, oh, I was desiring that which belongs to the Lord. ये सोच के कि मैं उस चीज की इच्छा कर रहा था जो भगवान की है Such a soft-hearted personality. इतने नर्म हृदय के व्यक्ति थे वो। But then it happened so that the pujari of that temple, he had a dream where this Gopinath appeared. तो ऐसा हुआ कि जो पुजारी थे मंदिर के उनको भी स्वप्न आया जहाँ पर गोपीनाथ जी प्रकट हुए And told this pujari that now there is this Madhavendra Puri visiting, and I have personally this Gopinathaji. He has hidden 2 pots of that kheer, and you should bring to this Madhavendra Puri. तो गोपीनाथ जी ने पुजारी से कहा कि मैंने 2 मटके खीर के रखे हैं और ये आप जाकर माधवेंद्र पुरी को दे दीजिए So then the pujari did as he was requested by the Lord. तो फिर पुजारी ने वैसा किया जैसे भगवान ने उनको बताया And Madhavendra Puri, of course, he was surprised to see this pujari and with the pots of kheer. माधवेंद्र पुरी बहुत ही आश्चर्यजनक हुए इस पुजारी को देखकर खीर के साथ But then immediately he got frightened, मगर एकदम से वो डर गए thinking that, well, when people hear of this, then they will express their admiration to me that there's such a special thing that has happened. ये सोच के कि जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो वो तो मेरी प्रशंसा करेंगे ये सुनकर So he decided that he has to leave immediately, तो leaving that उन्होंने place. सोचा कि अब मैं इस जगह को त्याग दूंगा छोड़ दूंगा यहाँ से Because he never wanted to become a famous person. वो कभी भी एक विख्यात आदमी नहीं बनना चाहते थे That is a pure devotee.
वो एक शुद्ध भक्त है। But it so happens that a pure devotee cannot escape this fame. It comes inevitably. मगर ऐसा होता है कि शुद्ध भक्त इससे दूर नहीं जा पाता, ये आ ही जाता है अपने आप। Now, hundreds of years after the incident, Srila Madhavendra Puri is discussed not only here in India but all around the world. तो 100 वर्ष बाद अभी भी इतने सैकड़ों वर्षों बाद भी माधवेंद्र पुरी की चर्चा भारत में नहीं हर जगह हो रही है। Whereas there are so many people who work really, really hard to become famous, and maybe some of them do, few of them, and then they are forgotten in a year or two, maybe 10 years. और बहुत सारे लोग विख्यात होने का प्रयास करते हैं, कुछ उनमें से हो भी पाते हैं, मगर फिर वो भुला दिए जाते हैं। So there is never any comparison between a mundaner and a devotee. तो कभी भी एक भौतिकवादी व्यक्ति में और भक्त में कोई उसमें तुलना नहीं है। So finally, Madhavendra Puri reached Jagannath Puri and got this chandan. तो अंत में माधवेंद्र पुरी जगन्नाथ पुरी पहुंच गए और उन्होंने चंदन वहां से ले लिया। And then his Gopalaji again appeared to him in a dream and told that he need not bring it all the way back there to Govardhan Hill, but he can smear that sandalwood paste on this Gopinathaji instead. तो उनके स्वप्न में फिर से गोपाल जी आए, तो उन्होंने कहा कि माधवेंद्र पुरी जी कि आप ये चंदन पूरा वापस गोवर्धन जी तक लाने की आवश्यकता नहीं है, आप गोपीनाथ जी को ही ये तिलक लगा दीजिए। And that would serve the same purpose. और वो उसका उद्देश्य भी वही होगा, सेम। Nowadays, this Gopal deity is in Nathdwar, Rajasthan. आज जो एक गोपाल जी का विग्रह है वो नाथद्वार राजस्थान में है। And he is worshipped by the followers of Srila Vallabhacharya. और वल्लभाचार्य के अनुयायियों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। Madhavendra Puri, he had several disciples, and one of them whose name already mentioned, Ishvara Puri Maharaj, who was Chaitanya Mahaprabhu's guru. तो माधवेंद्र पुरी जी के बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से एक थे ईश्वर पुरी जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। And then there was another one whose name was Ramachandra Puri. और एक और थे जिनका नाम था रामचंद्र पुरी। Before leaving this world, so Madhavendra Puri was uttering or crying out one particular verse. तो संसार छोड़ने से पहले माधवेंद्र पुरी एक श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। While he was tasting and experiencing the feelings of Srimati Radharani. जब वो स्वादन कर रहे थे और अनुभव कर रहे थे श्रीमती राधा रानी के भाव का। So he was crying out as follows. तो वो रो रहे थे इस प्रकार से। Aidina dayaranath he maturanatha kada balokyase hridayam twadalaka kataram daita brahmyati kim karami aham. O my Lord, O most merciful Master. हे मेरे भगवान, हे बहुत ज़्यादा दयालु स्वामी। O Master of Mathura. ओ मथुरा के स्वामी। When shall I see you again? मैं आपको फिर से कब देखूं? Because of not seeing you, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रहा। my agitated heart has become unsteady. मेरा जो हृदय है, दुर्बल हृदय है, वो अब अस्थिर हो रहा है। O most beloved one. ये सबसे ज़्यादा दयालु। What shall I do now? अब मैं क्या करूं? Ramachandra Puri, when he saw and heard the feelings of his Guru Maharaj, he was unable to appreciate that. रामचंद्र पुरी जब उन्होंने ये सुना अपने गुरु महाराज के वाक्यों को, तो वो पहचान नहीं पा रहे। When Madhavendra, he was crying that his life is unsuccessful, he has not attained love for Radha Krishna. माधवेंद्र पुरी कह रहे थे कि उनका जीवन असफल है क्योंकि उनको भगवान का प्रेम नहीं मिला। And Ramachandra, he exhibited some very offensive attitude. तो रामचंद्र जो थे वो बहुत अपराधजनक बातें करने लगे। He tried to take a position of instructor for his own guru. तो उन्होंने ऐसी परिस्थिति बनाई कि वो अपने गुरु को उपदेश दे रहे। And told his Guru Maharaj that you should rejoice in Brahman. और उन्होंने अपने गुरु महाराज को कहा कि आपको ब्राह्मण में आनंद लेना चाहिए।
Brahma bhuta prasannatma nasochati nakankshati, that one who is established in Brahman, that there is no lamentation, जो ब्रह्म में स्थित है उसके लिए कोई शोक नहीं है, because he was unable to understand the feelings of his own Guru Maharaj. क्योंकि वो समझने में असमर्थ थे अपने गुरु महाराज की भावनाओं को। So this made Madhavendra Puri very angry. तो इससे माधवेंद्र पुरी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। And he said that, oh, I have this suffering, and now there is just more suffering coming because of this dull-minded person. मुझे अभी भी दुख है, मगर इस मूर्ख व्यक्ति के कारण मुझे और दुख हो रहा है। And because of this, Ramachandra Puri, he had to overgo, or he ended up in some trouble. तो इस प्रकार से रामचंद्र पुरी को एक भयानक दिक्कत हो गई। He became a great offender and criticizer of the Vaishnavas. वो एक अपराधी और वैष्णवों के निंदक बन गए। Whereas Ishwarapuri Maharaj, he was personally very dedicatedly serving his Guru Maharaj, Madhavendra Puri. मगर जो ईश्वर पुरी थे वो बहुत ही अच्छे से अपने गुरु महाराज माधवेंद्र पुरी की सेवा कर रहे थे। He was always there present before the passing of Madhavendra, and he was personally, with his own hand, he was cleaning the stool and urine of his Guru Maharaj. तो वो माधवेंद्र पुरी के जाने से पहले उनके साथ थे और उनके मल मूत्र को भी वो साफ करते थे। And in this way, he attained great blessings from his Guru. इस प्रकार से उन्हें बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला अपने गुरु से। Madhavendra blessed him by saying that you will get love of God, pure Krishna prema. माधवेंद्र पुरी ने उनको कहा कि आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। But Ramachandra got just the opposite, मगर रामचंद्र को उसके विपरीत, by becoming a fault finder. एक दोष दृष्टि के कारण। What do you say? Why do people criticize? Why do people want to find faults in one another? तो आपको क्या लगता है क्यों लोग एक दूसरे में दोष देखते हैं? What is the reason for that? कारण क्या है उसका दोष देखने का? To see ourselves as superior Yes. than others. Want to translate that? अपने आप को और अधिक सुपीरियर या उच्च देखने के लिए। So it's a type of sense gratification. तो ये भी एक प्रकार का इंद्रिय तृप्ति है। Very twisted type of enjoyment. बहुत ही विकृत भाव की भोगना है। Yeah, must be. So many reasons. Superior, satisfying ego. Yes, but it's all just for personal satisfaction, and in doing harm to others and enjoying that, basically. दूसरों को कष्ट देना और उसको भोग करना। Yes, jealousy. All these polluted qualities are there. तो ये सारी दूषित गुण हैं। So this Ramachandra Puri, he ended up criticizing even the Supreme Lord himself. रामचंद्र पुरी ने तो भगवान की भी निंदा करना शुरू कर दिया। He had a strange way of first feeding the Vaishnavas. उनका एक अद्भुत तरीका था पहले वैष्णवों को खाना देना। Feeding them excessively. उनको बहुत ज़्यादा खिलाना। And then criticizing after that, what kind of devotee you are eating so much. और फिर उसके बाद उनकी निंदा करना कि किस प्रकार के आप भक्त हो, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। So this was some really strange behavior indeed. तो ये बहुत सारे आश्चर्यजनक उनका व्यवहार था वास्तव में। And when he met Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he tried finding some fault in him. और जब वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने कोशिश की उनमें भी दोष देखने की। But of course he was unable to. मगर वो देख नहीं पाए। But then one day he spotted something. मगर एक दिन उन्होंने देख ही लिया कुछ। He saw that there were ants in the room of Krishna Chaitanya Mahaprabhu. उन्होंने देखा कि भगवान के कमरे में चींटियां हैं। And as you know, ants can be crawling just anywhere. और चींटियां तो वैसे कहीं पर भी हो सकती हैं। But he took it as a sign that, oh, this sannyasi is having some sweets. मगर उन्होंने ऐसा सोचा कि अरे ये सन्यासी कुछ मीठा खाते हैं। And started criticizing that. और फिर उनकी निंदा करने लगे। It was just a made-up cause or made-up reason. ये एक बना हुआ उनका कारण था। And to all devotees, he was observing their eating and sleeping and all kinds of
their habits. और सभी भक्तों के वो खान पान और रहन सहन और इत्यादि को वो देख रहे थे. And we can see in our own selves that if we have this mentality that we are observing others, then we should see that that is not very good. और हमें देखना चाहिए हमारे मन में ऐसा अगर विचार है कि हम दूसरों के रहन सहन के बात को देख रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है. Not good if we try to find some fault in others' doings. ये अच्छा नहीं है कि हम दूसरे किसी वैष्णव में दोष देखें. We should always understand that the position of a guru is very dangerous. हमें हमेशा समझ के रहना चाहिए कि जो गुरु की स्थिति है वो बहुत ज्यादा भयानक है. And a fault finder is in a pretentious, false manner trying to take the position of a guru. और एक दोष दृष्टि वाला व्यक्ति वो एक विकृत अवस्था से गुरु की स्थिति में जाने के प्रयास करता है. So, when he started criticizing the Lord reacted on that. तो जब उन्होंने भगवान की निंदा की तो भगवान ने उसका प्रतिकार किया. But he reacted in the most humble way. मगर उन्होंने एक विनीत भाव से उसका प्रतिकार किया. He cut down his own eating. उन्होंने खाना कम कर दिया. He started eating half only of what he used to eat. वो आधा खाने लगे जितना वो पहले खाते थे. And this, of course, made the devotees very, very unhappy. इससे जो भक्त थे बहुत दुखी हो गए. Because all of them wanted to serve the Lord nicely and give him sumptuous prasadam. क्योंकि सभी भगवान को अच्छा प्रसाद देना चाहते थे, उनकी अच्छे से देखरेख करना चाहते थे. But the Lord was adamant. He did not accept, and he said that if you try to push me, then I will just go away. You will never see me again. मगर भगवान स्थिर थे. वो कह रहे थे कि अगर आप मुझे ज्यादा कहेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा. And when Ramachandra Puri, when he saw that the Lord had become thin, skinny, तो रामचंद्रपुरी ने जब ये देखा कि भगवान बहुत पतले हो गए हैं, he criticized him for that also. तो उनके लिए भी उन्होंने उनको दोष दिया. That what is this? A sannyasi shouldn't become so emaciated. ये क्या है कि सन्यासी जो है इतना पतला कैसे हो सकता है? So with this kind of a fault finder, he cannot be satisfied. तो इस प्रकार का जो दोषदर्शी है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता. Neither can he bring satisfaction or happiness to anyone else. ना ही वो संतुष्टि और खुशी दूसरों को दे सकता है. Nevertheless, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he was always very respectful towards Ramachandra Puri. फिर भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमेशा आदर देते थे रामचंद्रपुरी को. On the grounds that, after all, he was the god brother of his own Guru Maharaj. इस धरातल पे कि वो जो हैं उनके गुरु महाराज के गुरु भाई हैं. So therefore, Krishna Chaitanya Mahaprabhu took Ramachandra as his guru also. तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी को भी अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया. When the followers of Sriman Gauranga, they came to complain to Mahaprabhu about the behavior of the Ramachandra. जब महाप्रभु के अनुयायी चैतन्य महाप्रभु से कंप्लेन करने आए, शिकायत लगाने आए उनके बारे में, Mahaprabhu simply said that, well, what is wrong? He's saying just the right thing. महाप्रभु कहते थे गलत क्या है, वो तो सही बोल रहे हैं. The sannyasi should eat to keep the body and soul together. तो सन्यासी जो है वो तो उतना ही खाना चाहिए जिससे कि शरीर और आत्मा साथ में बनी रहे. That is the proper principle. यही असली सिद्धांत है. So he did not take offense. तो उन्होंने अपराध नहीं किया. But nevertheless, the devotees, they were very, very unhappy. मगर फिर भी जो भक्त थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे. So great unhappiness was there. तो बहुत ज़्यादा दुख था उस समय. So then what was the solution? तो समाधान क्या था? Usually we are interested in hearing, well, how does the story end? तो हम आमतौर पे बहुत ही दिलचस्पी देते हैं कि कैसे एक कथा अंत होती है. Did someone go and confront this Ramachandra and bring him down or give him a lesson? कोई गया था रामचंद्रपुरी के सामने और उनको कुछ शिक्षा दिया उनको? No, the solution was that Ramachandra simply went away from that place eventually. समाधान ये था कि रामचंद्रपुरी जो थे वो वहां से चले गए. So in this way,
we can see some problems will be just resolved on their own without any effort. तो हम देख सकते हैं कुछ समस्याएं अपने आप ही समाधान हो जाता है उनका बिना किसी एफर्ट के, Whereas some problems do require effort from our मगर part. कुछ समस्याओं को निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान चाहिए होता है, And it does require intelligence to see where we should act and where we shouldn't. और उसमें बुद्धि भी चाहिए होती है कि हम किस चीज में क्रिया करें और किस चीज में क्रिया ना करें. In any case, tolerance and patience there is a divine quality. किसी भी अवस्था में जो सहनशीलता है वो एक दैवी गुण है, A quality very much needed in this time. एक दैवी गुण जो बहुत ज्यादा जरूरी है. So what were the qualities we were discussing today? तो क्या गुण जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज. Qualities in the personality of Madhavendra Puri, गुण माधवेंद्र पुरी जी के and for that matter, Krishna Chaitanya Mahaprabhu himself. और उस संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी. So what kind of qualities? What do you say? तो किस प्रकार के गुण थे, आप क्या कहते हैं? Yes. Niswart. Non-selfish. Yes. Yeah. Non-selfishness or selflessness. Yeah, that is a very important quality. Selfishness never brings any good to anyone. What else? Devotion. Yes, that is the essence, the essential ingredient. Humility also. दीनता. Krishna, when he is explaining to Arjuna in the Gita that what is knowledge, humility is the first thing that Krishna mentions. कृष्ण जब भगवद गीता में अर्जुन को ज्ञान के बारे में बता रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज बताते हैं दीनता. What else? Disrespect नहीं कर रहे वो अपने गुरु जी गुरु भाई. Saying that he was not disrespecting his guru's god brother. Yes. We should always respect. We should actually respect everyone and anyone. हमें सभी की आदर करना चाहिए किसी भी अवस्था. But understanding also the right way to do that. मगर ये भी समझना चाहिए कि उसका उचित तरीका क्या है. And Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he was exhibiting his divine godly opulences in many ways. चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति कर रहे थे. And in connection with this Ramachandra, he was, the opulence was that he still, even despite all this criticism, he was still respectful. तो इतना क्या ऐसा था कि इतने सारे निंदा होने के बाद भी वो दूसरों की इज्जत कर रहे थे. But at other times, he just ignored Ramachandra altogether, like a straw on the street. और कुछ अन्य समय पर जो चैतन्य महाप्रभु थे वो उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर. Because of being self-controlled. क्योंकि वो आत्म संयमी है. Also with Madhavendra Puri, we can see that there was great determination, great efforts. और माधवेंद्र पुरी में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा determination है, उत्साह है. He never thought that, well, let me go and get this sandalwood from some close by place. उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे ये चंदन किसी पास के स्थान से लेना चाहिए. He was ready and willing to go far away and carry all this heavy load with him. वो इतनी दूर जाने के लिए भी तैयार थे और अपने साथ इतना लोड लेकर जाने के लिए भी तैयार थे. And then, of course, patience and tolerance. और फिर धैर्यता और संयमता. To reach love of God, all these qualities must be there. भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए. And in anyone's life, there cannot be any success without developing good qualities. और जीवन में कभी भी सफलता नहीं हो सकती जब तक ये अच्छे गुण नहीं आएंगे. So unless we develop good qualities in this life, our life is a failure. जब तक हम अपने जीवन में अच्छे गुण नहीं लाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है. So love of God is the situation where all good qualities are manifest. तो भगवान का प्रेम ही ऐसी स्थिति है जहाँ पर सारी अच्छे गुण आ जाते हैं. But we cannot just jump there. We have to gradually develop.
मगर हम एकदम से वहाँ छलांग नहीं लगा सकते, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा. So, on tomorrow evening's class, we will be discussing more on Krishna Chaitanya Mahaprabhu's pastimes तो कल संध्या की क्लास में हम और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे and his loving dealings, और किस प्रकार से वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते थे प्रेम पूर्वक, which do not always seem as we would expect love to appear. जो हमेशा ऐसे नहीं दिखेंगी जैसा हम सोचते हैं कि प्रेम होना चाहिए. Krishna Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, they captivate the mind चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं मन को मोहित कर लेती हैं and melt the heart. और हृदय को द्रवित कर देती हैं. Simply hearing these pastimes, it has a transforming effect. केवल इन लीलाओं का श्रवण करने से ही एक व्यक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन आया है. And when you come and visit this temple, anytime when you do come and visit here, और आप कभी भी इस मंदिर में आते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं, please try to make it a point that you hear something of Krishna Chaitanya Mahaprabhu. एक आप विचार ले सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ सुने चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कृष्ण के बारे में. The devotees here will be happy if you ask such questions. आप तो यहाँ पर खुश होंगे अगर आप उनसे प्रश्न पूछेंगे. So this way, make sure that you go not just with a full stomach, but with a full heart also. तो आप यहाँ से जाएं पेट भरकर नहीं मगर हृदय भरकर भी. That will be of great benefit for you. तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा. Thank you very much for coming this evening. बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Perhaps we can take still a moment if there are some questions or comments. किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का टीका टिप्पणी हो, वो पूछ सकते हैं. Why don't you ask the questions? Ask Like the- a mini quiz. Unfortunately, at this time I don't have prepared a mini quiz, but let's see from the top of the mind. अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो if we ask question from someone, then that will amount to fault finding. Why would it be like that? Why questioning would be fault finding? Sometimes happens. Sometimes, yeah. That's a valid point. We should see what kind of attitude we're asking with. हमें देखना चाहिए हमारा भाव क्या है पूछने. So if the attitude is very challenging, then it can be something close to fault finding. अगर भाव हमारा चुनौती देने वाला है तो वो एक दोष दृष्टि होगी. Challenging inquiring can be good also at certain times. चुनौती देना भी कभी-कभी अच्छा हो सकता है. Between friends when there is some relationship established. मित्रों के बीच में अगर कोई रिश्ता उनके बीच में है. But unless two people know one another, then better refrain from these challenging inquiries. अगर हम किसी को नहीं जानते तो उनको चुनौती नहीं देना चाहिए. A wife can ask the husband, where were you last night? That's a challenging inquiry, isn't it? एक पत्नी पति से पूछ सकती है तुम कहाँ थे पिछली रात. But when in a more official setting, then better keep some polite mood. अगर एक औपचारिक अवस्था में आप एक दैन्य भाव रखकर बात कीजिएगा. And the path of spiritual knowledge comes through submission. दिव्य ज्ञान जो है वो विनीत भाव से ही आता है. So this way, well, I'll give you one personal example. मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण दूंगा. When I was working in a healthcare station, जब मैं एक हेल्थ केयर स्टेशन में काम कर रहा था, I was working as a podiatrist, foot therapist. तो मैं एक पोडियाट्रिस्ट की तरह काम कर रहा था. And sometimes some doctors came to ask some questions. कभी-कभी कुछ डॉक्टर आते थे मुझसे प्रश्न पूछते थे. But some of them had this attitude that, well, I'll just go and ask, but, well, he's a foot therapist, so what does he know? और कुछ डॉक्टर्स का ये सोचना था कि ये तो एक फुट थेरेपिस्ट है,
तो So- इसको ज्यादा क्या पता होगा? So even if I would have good answers to his questions, but I sense that he has this, like, well, I'm not a good attitude. Why would I want to give him some good answers? तो अगर मुझे पता है कि इनका भाव सही नहीं है और ये देने के लिए सही अवस्था में नहीं है, तो मैं क्यों उनको उत्तर दूं? There's not a perfect example, but you get the idea. ये एक पूरा आदर्श उदाहरण नहीं है, मगर आपको समझ में आ गया होगा. So we should, in all our dealings, we should see that what is our motivation, what is the attitude. तो हर एक हमारे व्यवहार में हमें देखना चाहिए कि हमारा भाव क्या है, हमारी भावनाएं क्या हैं. So questions, in a general sense, they should be an expression of our curiosity, that we're interested. तो जो प्रश्न है वो हमारे जिज्ञासा का एक अभिव्यक्ति होने चाहिए, And then there is no trace of fault finding. और उसमें फिर कोई दोष दृष्टि नहीं होगी. Is that okay? क्या ये ठीक है? Any other questions? Why was finding fault again and again? Was his behavior? Yeah. Well, Keshavanam Prabhuji, he put it very nicely that everyone has to have something to enjoy. केशव प्रभु बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ भोग करने के लिए है. We must derive some happiness from something, whatever it might be. And हमें कहीं ना कहीं से तो खुशी देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी. one brahmachari, one time he explained it very nicely that even such a thing as yawning, like, trying to stretch it and squeeze some enjoyment out of it. Such a minor silly thing. तो एक बार एक ब्रह्मचारी ऐसे बहुत बड़ी उदासी लेके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसी में उनकी खुशी है पूरी. Or the pig can find some happiness in eating stool. और एक सुअर जो है वो उसमें खुशी ढूंढ सकता है विष्ठा खाने में. Thinking, oh, now the stool is nice, fresh and warm. ये जो मलमूत्र है ये बड़ा अच्छा है और गरम-गरम है. What a delight. So everyone has to have some joy, some satisfaction from something. तो हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज चाहिए जिससे वहां से वो सुख ले. And it can be something very elevated, or it can be something very, very low. वो या तो बहुत ज्यादा उत्तम हो सकता है या बहुत ज्यादा निकृष्ट. So in Ramachandra's case, it was very lowly. रामचंद्रपुरी के केस में ये ऐसा था कि वो निकृष्ट था. And I'm pretty sure that he could not even get any real happiness. Maybe when he thought of something, how to criticize the Lord, he thought, oh, I made it. Now I made it. I was successful in my efforts. शायद वो जब सोचते थे कि मैं भगवान की कैसे निंदा करूं, तब वो थोड़ा खुश हो सकता है प्रतीत कि अब मैं सफल हो चुका हूं. And then when one takes that path, one becomes trapped in it. और जब वो उस रास्ते का चयन करते हैं तो उसमें वो फंस जाता है. It's the same thing when we go in the internet or YouTube, and then we get some delight from watching some YouTube reels or whatever. जैसे हम YouTube पे जाते हैं और YouTube में कुछ रील्स या वीडियोस देखकर उसमें आनंद देखते हैं, उसी प्रकार से. And then we become trapped. फिर हम फंस जाते हैं. One more video. एक और वीडियो. One more video. एक और वीडियो. It's already past midnight, but still maybe one more video. 12 बज गए हैं फिर भी एक और वीडियो. Or eating some sweets. Well, one more piece. मीठा खा रहे हैं तो एक और मीठा, एक और मीठा. So like this Ramachandra, he got trapped in that तो इस प्रकार से रामचंद्र जी उसमें फंस गए थे. with the illusory thought that there is some enjoyment, some happiness. मायावी इस विचार में कि इसमें कोई खुशी मिलेगी. Whereas in reality, it was only suffering, only misery for himself and for others also. वास्तव में वो तो दुख था स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी. But even such behavior, when it's in connection with the Lord, there is something that we can learn from it. मगर अगर ये व्यवहार अगर भगवान के संपर्क में है, उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं. So the Lord comes to teach dharma. भगवान जो है वो धर्म सिखाने आते हैं. And to enact his leela, there has to be these culprits or bad guys also. और लीला करने के लिए तो ये बुरे लोग भी आने चाहिए और ये गंदे जो विलेन्स हैं उनको भी आना चाहिए. So in that way, they are also doing service. तो वो भी सेवा कर रहे हैं. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हिरण्यकशिपु को भी more service.
Yes, then Prahlad. Yeah, very controversial. Yeah, that's a good point. Yeah, and Prahlad, he was, yeah, minor personality as compared to Hiranyakashipu. That Hiranyakashipu was more important than Prahlad Maharaj. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said. Such a controversial statement. Yes, Prabhu. What was his end? Did he stop criticizing? What was his end? It's not explained there in Shri Chaitanya Charitamrita. चैतन्य चरितामृत में अभी विवरण नहीं है. I'll try and investigate somehow if it's available somewhere, but what is said there in Shri Chaitanya Charitamrita. He get leprosy. Did he get leprosy? There were some others who got, but as far as I was just reading the 8th chapter of the Antya Lila, and there he just went away from the scene. But we'll investigate and I will return. Good question. Good question. Any other question? Like when Jagai Madai attacked Nityanand Prabhu, so Chaitanya Mahaprabhu attacked them with Sudarshan Chakra. Then he should also attack the Ramachandra Puri, but he don't. Why? Ramachandra Puri. Oh, you want to translate that? जब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई में मदाई को सुदर्शन चक्र दिखाया तो रामचंद्र पुरी को क्यों नहीं दिखाया? You're a thoughtful young gentleman. I appreciate that. Good question. Thank you for asking. बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. So the difference between these two episodes is that the Lord never minds when he himself is being offended. इन दोनों घटनाओं में ये फर्क है कि भगवान जब स्वयं उनकी निंदा होती है तो उसका माइंड नहीं करते. But he cannot tolerate and will not tolerate offense to his devotees. अगर अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को वो क्षमा नहीं करते. So in this incident with Jagai and Madhai, Nityananda Prabhu is being offended. तो जगाई मदाई की घटना में नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध हो रहा था. And then because of that, immediately the Lord was ready to kill this Jagai and Madhai. और क्योंकि उसके कारण भगवान एकदम से जगाई मदाई को मारने के लिए इच्छुक थे. And only because of Nityananda Prabhu's mercy and he's requesting the Lord save their lives. और नित्यानंद प्रभु के अनुमोदन पे और उनके रिक्वेस्ट पे ही भगवान ने उनको छोड़ा. And not only saved or spared their lives, but made them devotees. उनको छोड़ा ही नहीं मगर उनके जीवन को बदल दिया, उनको भक्त बना दिया. And actually this was Nityananda Prabhu's desire. और यही नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी. He was thinking that if the Lord shows mercy to these such lowly persons and makes them devotees, then the glory of Krishna Chaitanya Mahaprabhu will just enhance. नित्यानंद प्रभु का यही सोचना था कि अगर भगवान नीच लोगों को भी उत्तम कृष्ण प्रेम दे दे तो भगवान का जो यश है वो फैल जाएगा. Because after all, he is the most merciful incarnation of the Lord. क्योंकि अंततः वो बहुत ही उदार व्यक्ति है. Which is shown in many ways. जो कि बहुत सारे लीलाओं से पता चलता है. Tomorrow we will discuss that more. कल हम उसकी चर्चा करें. But he was also disobeying Madhavendra Puri as being his student. Madhavendra Puri's student. Who was disobeying? Ramachandra Puri. Oh yes, yeah, that is true. That is true. Yeah, and he, So you said that because of Ramachandra Puri's offense to his guru, that should have made Krishna Chaitanya Mahaprabhu angry. He was not present there at that time. So, because the Lord, he knows everything, but he acts as if he is not aware of everything what happens. भगवान जो है वो उस स्थान पर उपस्थित नहीं थे मगर भगवान उनको पता सब कुछ है मगर ऐसे कार्य करते हैं जिसको पता नहीं. Sometimes these things are difficult for us to understand. कभी-कभी इन चीजों को हमारे लिए कठिन हो जाता है समझना. Because it's the Lord's Leela has so many different things connected, and if one part is a little off, then the whole structure or the whole drama would collapse. भगवान का जो लीला इस प्रकार से है कि एक पार्ट भी अगर खराब हो तो सारा ड्रामा खराब हो जाएगा. And especially, Lord, as Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he wants to
play the part of not being God. और खास करके भगवान चैतन्य महाप्रभु इस पार्ट को प्ले कर रहे हैं कि वो भगवान नहीं है. Krishna also in Vrindavan, but in particular Sriman Mahaprabhu. कृष्णा वृंदावन में मगर वास्तव में वो चैतन्य महाप्रभु ही है. Tomorrow I'll promise I prepare a proper quiz. Related to this lecture, if it makes a person curious. I see what you mean. Should I have something prepared? I please excuse me. Even we now just have the kirtan. Yeah, we're gonna make it. Good. Hare Krishna. Hare Krishna. So we thank you, His Grace Bharga Prabhu, for his very inspiring lecture by saying Hare Krishna 3 times. Everyone, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare